Hello students, how are you? Today we are here to discuss a mechanism of substitution reaction. The mechanism is known as Sn1 mechanism, that is substitution nucleophilic unimolecular reaction. Yesterday or in the previous video we have discussed Sn2 mechanism. Today we will discuss Sn1 mechanism, that is substitution nucleophilic unimolecular reaction. In this particular type of mechanism, the rate of reaction depends only on the concentration of one species. That's why it is known as unimolecular reaction, because the rate of reaction depends only on one species. The reaction takes place in two steps. And in this particular case, as you know, if reaction takes place in a number of steps, the rate of reaction depends on the slowest step. In this particular mechanism, the rate of reaction depends on the slowest step. During the course of reaction, an intermediate is formed. As you know, intermediate are the species which are highly reactive and highly unstable, having much higher energy content. After the reaction is over, the product found has retained configuration. That means there is retention of configuration. Okay, let's clarify this with an example. As we can see here in our particular example, this is our tertiary butyl chloride. Tertiary butyl chloride, when reacts with potassium hydroxide in presence of acid, we get tertiary butyl alcohol and KCl. That means here substitution is taking place. Cl means chlorine is being substituted by alcoholic or OH group in the particular reaction. The particular reaction takes place in two steps. First step is the slow step, in which there is a generation of carbocation. As you can see here, this is tertiary butyl chloride. When it reacts with H+, H+ is a species with electron deficient. So here chlorine will go to H+ with its bonded pair of electrons. जब क्लोरीन यहाँ से अपने बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेकर के H+ के पास चला जाएगा तो वो बना देगा HCl, और पीछे जो बचा रह जाएगा दैट इज योर कार्बोकेटायन. क्यों? क्योंकि कार्बन के पास एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसका जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था वो क्लोरीन अपने साथ लेकर के चला गया. दिस कार्बोकेटायन इज योर 3 degree carbocation, and you all know that 3 degree carbocation is the stable carbocation. अब जब कार्बोकेटायन बन गया, दिस इज योर रिएक्शन इंटरमीडिएट. आपको पता है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट काफी देर तक नहीं रहेगा, सो अगला स्टेप तुरंत होगा एंड दैट स्टेप विल बी द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? कार्बोकेटायन के पास ये OH माइनस जो यहाँ से आ रहा है K+ और OH से, OH माइनस बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ है, वो आकर के इस कार्बोकेटायन पे अटैक करेगा. देखिए OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, ये आकर के इस कार्बोकेटायन पे जब अटैक करेगा तो यहाँ पे OH ग्रुप लग जाएगा एंड द प्रोडक्ट इज योर टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल. ये रिएक्शन जो है, रिएक्शन 2 स्टेप में हुआ है, जिसमें पहला स्टेप स्लो है, दूसरा स्टेप फास्ट है. इस तरह के मैकेनिज्म को हम कहते हैं Sn1 मैकेनिज्म. तो हमने देखा कि Sn1 मैकेनिज्म में एक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है और वो स्टेप स्लो स्टेप होता है. दैट मीन्स कि रेट ऑफ रिएक्शन या इस मैकेनिज्म को डिफाइन करने के लिए ये वाला जो हमारा स्टेप है, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप. इसका मतलब है कि कार्बोकेटायन जितना जल्दी बन सकता है, रिएक्शन उतना जल्दी प्रोसीड करेगा. तो आपको याद होगा कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है? 1 डिग्री कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल, 2 डिग्री कार्बोकेटायन 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल, 3 डिग्री कार्बोकेटायन. दैट मीन्स 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो है वो सबसे जल्दी बनेगा, और उसके बाद 2 डिग्री बनेगा, उसके बाद 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा. तो अगर हम ये कहना चाहें कि रिएक्शन रेट बताइए आप, अगर रिएक्शन होता है Sn1 मैकेनिज्म से, तो हमको क्या बताना पड़ेगा? इफ रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू Sn1 मैकेनिज्म, इफ रिएक्शन टेक्स प्लेस
through Sn1 mechanism, the rate of reaction follows the order as you can see. Order of reactivity is प्राइमरी से ज़्यादा, सेकेंडरी और सेकेंडरी से ज़्यादा टर्सरी if the reaction goes through Sn1 mechanism as we have discussed today. According to our last class, if the reaction is taking place through Sn2 mechanism, the order of reactivity just gets reversed. That means primary alkyl halide will react fastest, after that secondary, and सबसे कम रिएक्टिविटी टर्सरी अल्काइल हैलाइड की होगी अगर रिएक्शन Sn2 मैकेनिज्म से हो रहा हो तो. And the last point for the today's lecture is there is retention of configuration in Sn1 mechanism. As you can see, यहाँ हमने क्या लिया था, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड रिएक्शन कराया KOH के साथ in presence of acid V. Okay? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल प्लस KCl. ध्यान देने वाली बात है, क्लोरीन जहां से निकला था अल्कोहल वहीं पर आकर के लगा है. क्लोरीन जिस बॉन्ड प्रोजेक्शन से निकला था, क्लोरीन जिस बॉन्ड प्रोजेक्शन से निकला था ठीक वहीं पर आकर के OH ग्रुप लगा है. आपको पता है कि ये कार्बन जो है ये sp3 हाइब्रिडाइज है. ये sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब कि ये कार्बन जो है वो टेट्राहेड्रल है. टेट्राहेड्रल में चारों बॉन्ड जो होते हैं वो 109.5 डिग्रीज के प्रोजेक्शन पे होते हैं. तो क्लोरीन जिस बॉन्ड से, जिस जगह से, जिस स्पेस से रिमूव हुआ है OH ग्रुप आकर के ठीक वहीं पर लगा है. दैट मीन्स जो कॉन्फ़िगरेशन हमारे रिएक्टेंट का था वही कॉन्फ़िगरेशन हमारे प्रोडक्ट का है. दिस इज कॉल्ड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. दिस इज नोन एज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. अब ये रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग आगे फिर इस्तेमाल करेंगे. Sn1 और Sn2 मैकेनिज्म पढ़ने के बाद आपको बहुत सी बातें क्लियर हो गई होंगी. आप दोनों लेक्चर्स को एक साथ देखिए और दोनों में डिफरेंस क्या क्या है ये चीज एनालाइज करने की कोशिश करिए. ये काम जब आप खुद से करेंगे तो यू विल गो थ्रू द मैकेनिज्म और ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू स्टूडेंट्स.